garlic paratha. So I'm going to tell you how many ingredients we need. First of all, we'll make mayo garlic sauce. Mayonnaise 4 tablespoons, yogurt 3 tablespoons, fresh garlic, 1 tablespoon garlic, and now mix. Mix, mix, mix. Mama, mix, mix, mix. मायो गार्लिक के लिए हमें चाहिए पराठे, सम सलाद एंड कबाब. और मायो गार्लिक सॉस तो हमारी वैसी रेडी हो चुकी है. तो चलें हम बनाते हैं. फर्स्ट वी विल टेक 1 पराठा. टू टेबलस्पून इसमें हम सॉस डाल देंगे. 1 टेबलस्पून. एंड सेकेंड, गाइस इसकी तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तेज़ खुशबू आ रही है. अब हम इसको स्प्रेड करेंगे. हमने इसको अच्छे से स्प्रेड कर लिया है. नाउ अब हम अपनी सलाद रखेंगे. और हम अपना कबाब रखेंगे. Now add some ketchup. Now we will roll it. Now we will add toothpicks. 2 toothpicks should do the trick. It's ready, guys. Look at it. It's so yummy.